प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, Jai Bhim. So you'll notice today that both Mokshsara and I are in blue. तो आज आपका ध्यान गया होगा कि आज मोक्षसारा और मैं दोनों नीले कपड़ों में हैं। Now you know why. और अब आप जानते हैं कि क्यों? Because we're going to start with the Ashok Chakra. क्योंकि हम अशोक चक्र के साथ शुरुआत करने वाले हैं। That's the proud blue in your flag. ये आपके ध्वज में का आपको गर्व महसूस कराने वाला नीला रंग है। And why is that Ashok Chakra there? और ये अशोक चक्र वहाँ पे आपके झंडे पे क्यों है? Why is it there? Why is there not something else there? और वही वहाँ पर क्यों है? वहाँ पर अन्य कोई चीज क्यों नहीं है? We know that there's saffron. तो हम जानते हैं कि वहाँ पे जो है वो संतरा रंग है। We know there's green. और हरा रंग है। We know there's white. और हम जानते हैं कि सफेद रंग है। But right in the middle is the Ashok Chakra. लेकिन एकदम बीचों बीच जो है वो अशोक चक्र है। In blue. और वो नीले रंग में है। So that's there because Baba Sahib suggested it should be there. और वो वहाँ इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने सूचित किया था कि उसे वहाँ होना चाहिए। The original idea was that there would be the charka, the spinning wheel. तो जो पूर्व की उसकी कल्पना थी तो ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पे चरखा होना चाहिए, ऐसी चर्चा चल रही। But in the committee, the National Flag Committee of the Constituent Assembly, Baba Sahib suggested better have the Ashok Chakra. लेकिन संविधान की जो ध्वज समिति थी उसमें बाबा साहब ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि वहाँ पे उसके स्थान पर अशोक चक्र रखा जाए। A more universal symbol. और ये अधिक वैश्विक ऐसा प्रतीक है। Of course, this is copied from the lion pillar at Sarnath. और निश्चित ही सारनाथ का जो स्तंभ है सिंह स्तंभ उसमें से इस प्रतिकृति को लिया गया। And that's the capital of that stump is your crest. Your crest, the symbol of the republic. और वही से जो है इस आपके गणतंत्र के इस प्रतीक को लिया गया है। What does it mean? और इसका अर्थ क्या होता है? In the description that the National Flag Committee put out, it's said to be the symbol of peaceful change. तो राष्ट्रीय ध्वज समिति थी उसमें ऐसा कहा गया है कि ये एक प्रतीक है एक शांति भरी श्रृंखला का। And that's a very good way of thinking of it. Huh? और इसके बारे में ऐसा सोचना ये एक अच्छा तरीका है। Because we remember why Samrat Ashok became a Buddhist. क्योंकि उससे हमें याद आता है कि क्यों सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध बने थे। He saw the battlefield at Kalinga. उन्होंने कलिंग का जो है वो युद्ध का मैदान देखा था। Where he conquered eastern Orissa. जहाँ पर उन्होंने पूर्वी उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था, जीत लिया था। With terrible bloodshed. और इसके लिए बहुत खून बहाया गया था। And he said that from now on he would conquer not with the sword but with the Dhamma. और फिर इसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके आगे जो है वो किसी चीज पर जीत जो है तलवार से हासिल नहीं करेंगे बल्कि धम्म से हासिल करेंगे। So it's deeply significant that this is in the center of your national flag. और इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो है आपके ध्वज के केंद्र में है। Of course we're familiar with it as the wheel of the Dhamma. अब निश्चित ही धम्म चक्र के रूप में भी हमें परिचित है। On the stump it probably represents the Dhamma Rajya. और स्तंभ पे निश्चित ये धम्म राज्य का प्रतीक है। It means the rule of the Dhamma. और इसका अर्थ होता है कि धम्म का राज्य होना। It means a government that is based upon justice, ethical principles. इसका अर्थ होता है ऐसा सरकार जिसके कार्य की बुनियाद में जो है न्याय पूर्ण मूल्य है। But there's something we notice. लेकिन एक बात है जो हम ध्यान दे सकते हैं। We notice that the wheel has 24 spokes. तो हम देख सकते हैं कि इस चक्र में जो है 24 आरियां हैं। So is this significant? और ये महत्वपूर्ण है। क्या? Well, we're told that yes, it has a great significance. और हमें बताया जाता है कि हाँ निश्चित ही इसका बहुत बड़ा सा महत्व है। We're told it represents Pratityasamudpat. तो हमें ऐसा बताया जाता है कि ये प्रतीत्यसमुत्पात का प्रतीक है। This is on your flag. Huh? और ये जो है आपके ध्वज पर है। Isn't this amazing? Yeah. और क्या ये बात अद्भुत नहीं है? Such a deep
teaching there on your flag. तो इतनी गहरी ये जो शिक्षा है वो वहाँ पे आपके ध्वज के ऊपर है। Nothing like that on our flag in England. तो इंग्लैंड के हमारे ध्वज पे ऐसा कुछ भी नहीं है, One day there will be. लेकिन एक दिन वो होगा। Yes, English people, you know, we have to have this on our flag too. What are these 24 spokes? लेकिन ये जो 24 आरियाँ हैं ये क्या है? Well, they're said to represent the Nidana chain. तो ऐसा कहते हैं कि वो निदानों की जो श्रृंखला है उसकी कड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। But usually we think of only 12 Nidanas. लेकिन आमतौर पे हम केवल 12 ही निदानों के बारे में सोचते हैं। Actually, there are 24. देखा जाए तो वास्तव में वहाँ पे 24 निदान है। In this case, they probably represent the 12 stages, the 12 conditions that make up, first of all, our suffering. तो यहाँ पे इस मतलब बात में जो शुरुआती जो 12 निदान है वो उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे दुखों का कारण बनता है। They show the way in which in our human lives we create suffering for ourselves, create suffering for others. तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे मनुष्य जीवन में हम अपने लिए दुख का निर्माण करते हैं और हम अन्य लोगों के लिए दुख का निर्माण करते हैं। But that's only 12 spokes. लेकिन वो केवल फिर 12 ही आरियाँ। What about the other 12? तो फिर 12 बाकी की आरियों का क्या? Well, they represent the undoing of those 12 spokes that create suffering. तो वो इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि किस प्रकार से उन 12 कड़ियों के प्रभाव को कम किया जाए जो दुख का निर्माण करती है। They represent the steps that we need to take to get rid of our suffering, the suffering of others. तो वो हमें बताती है कि कौन से कदम हमने उठाने चाहिए ताकि हम अपने दुख को दूर कर सकें और अन्य लोगों के दुख को दूर कर सकें। Tomorrow we're going to look at what they mean in more positive terms. तो कल हम देखने जाएंगे कि अधिक सकारात्मक रूप से उनका क्या अर्थ होता है, सकारात्मक शब्दों में उनका क्या अर्थ होता है। But for the time being, what we're going to look at is the way in which we create our own suffering. लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने खुद के दुख का निर्माण करते हैं। And then how we undo that suffering by undoing the conditions that create it. और किस प्रकार से हम उन दुखों को दूर कर सकते हैं, उन परिस्थितियों को दूर करके जो परिस्थितियां उस दुख का निर्माण करती है। This is on your flag. Huh? तो ये बात जो है आपके ध्वज के ऊपर है। Such a deep teaching. It's amazing. और इतनी गहरी ये शिक्षा है और ये बात अद्भुत है। Even though I'm not an Indian, I can salute that flag. Yeah. और भले ही मैं भारतीय नहीं हूँ, उस ध्वज को मैं सलाम कर सकता हूँ। So today we're going to look at these 12 nidanas. Huh? तो आज जो है हम इन 12 निदानों की ओर देखने वाले हैं। And then we're going to look at, very briefly, how we undo those nidanas to lead to freedom. और फिर हम बहुत संक्षेप में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन निदानों के साथ कार्य कर सकते हैं ताकि हम अपने दुख को दूर करें। I should say at this point that nidana, we usually in English translate as link, in तो a chain. यहाँ पे मुझे बताना होगा कि निदान को हम अंग्रेजी में कड़ियाँ इस तरह से उसका जिक्र करते हैं। That's not really what it means. Huh? लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं होता है कि किसी कड़ी की किसी चेन की श्रृंखला है कड़ियाँ। It means a cause or condition. तो इसका अर्थ होता है कारण या परिस्थितियाँ। And it's in use, I believe, even today in medicine, or maybe in Ayurveda, I'm not sure. और ये जो शब्द है मुझे लगता है कि आज भी उपयोग में आता है आयुर्वेद में या औषधि शास्त्र में, मैं नहीं जानती। It means the causes or conditions that create a particular disease or medical condition. तो इसका अर्थ होता है कारण या परिस्थितियाँ जो किसी बीमारी को या किसी परिस्थिति को निर्माण करती है। If you like, these are the causes or conditions that create our human suffering. तो अगर आप इस तरह से समझना चाहे तो ये वो परिस्थितियाँ हैं जो हमारे मानवीय जीवन के दुख को निर्मित करती है। And then the second 12 represent the way in which we eliminate that suffering. और फिर बाकी की 12 कड़ी आपको वो बताती है कि किस प्रकार से हम उस दुख को दूर कर सकते हैं या उससे निजात पा सकते हैं। So these nidanas are found particularly on a very striking image. तो ये निदान जो है बहुत ही विलक्षण ऐसे एक चित्र में पाया जाता है। So if I could have the second slide. तो अगर दूसरी स्लाइड लगाई जाए। I don't know whether you can see, but this is a black and white representation of what is known as the Tibetan Wheel of Life. मुझे नहीं पता शायद आपको अगर देख पा रहे तो ये जो है
तिब्बतियन जो बहुचक्र है उसका चित्र है काले और सफेद रंग में। We're not going to look at that wheel of life in detail today. तो इस जीवन चक्र या भव चक्र की और बहुत विस्तार से हम आज नहीं देखने वाले। Another year there could be a Ratnavali series on the wheel of love. तो दूसरे किसी साल में और एक रत्नावली की श्रृंखला हो सकती है और जिसमें हम इसी विषय को देखेंगे भव चक्र को। I'm just putting a word in Ritayus's ear. तो मैं बस हृदयेश के कान में शब्द डाल रहा हूँ। And there are plenty of people who can expound this. और बहुत सारे लोग हैं जो इसका विश्लेषण कर सकते हैं। It's called the Tibetan wheel of life, but it's not actually only Tibetan. तो इसे तिब्बती भव चक्र कहा जाता है, लेकिन ये केवल तिब्बत से ही संबंधित नहीं है। Any Tibetan monastery you go into, you'll see the Bhava Chakra there outside the main vihara. किसी भी तिब्बती मठ में आप चले जाते हैं तो उनके विहार के बाहर आपको ये भव चक्र मिलेगा। But if you go to Ajanta, you will see a version of the Bhava Chakra. लेकिन अगर आप अजंता जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये भव चक्र का एक स्वरूप देखने को मिलेगा। Some of our friends have just come back from Ajanta. तो हमारे कुछ मित्र अभी अजंता से आए हैं। Or you're going there. Well, look for it when you go. तो वो वहाँ जा रहे हैं और जब वो वहाँ जाएंगे तो उसको देखेंगे। So that goes back, I think, to the 6th century or something like that. तो फिर इतिहास में जाए तो इसे 6वीं शताब्दी से हम देख सकते हैं। And there's a very early Buddhist text called the Divyavadana. और बहुत ही आरंभिक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदाना। It's a Sanskrit text, very early. और ये संस्कृत में है ग्रंथ है बहुत ही आरंभिक काल का है। And there's one story in which the Buddha outlines the Bhava Chakra with rice grains. और वहाँ पे कहानी है जहाँ पे बुद्ध चावल की दानों की सहायता से इस भव चक्र को समझाते हैं, इसकी रूपरेखा समझाते हैं। And he says it must have this here, it must have that there, it must have that there. और वो कहते हैं कि यहाँ पे ये बात होनी चाहिए, यहाँ पे ये बात होनी चाहिए, ये बात यहाँ होनी चाहिए। You'll see around the outside there are the 12 sort of cartouches, pictures. तो बाहर की और बाहर के घेरे में आप देख सकते हैं कि 12 चित्र हैं वहाँ पर। These represent the 12 nidanas. और ये जो है 12 निदानों का प्रतीक है। Which show us in depth how we create our own suffering. जो हमें बहुत गहराई से ये बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने दुखों का निर्माण करते हैं। And once we've understood how we create our suffering, well, we can get rid of it. और एक बार अगर हम इस बात को समझ जाए कि किस प्रकार से हम अपने दुख को निर्माण करते हैं, उसमें से बाहर भी आ सकते हैं। So this is the Buddha's diagnosis of our lives. तो ये बुद्ध के द्वारा दिया गया विश्लेषण है हमारे जीवन का। So it would be wonderful to go into this very picture more, but we haven't time today. तो इस चित्र को विस्तार से देखना अच्छा रहेगा, लेकिन आज हमारे पास उतना समय नहीं है। We're just going to concentrate on that outer circle of 12. तो बाहर का जो 12 कड़ियों का वो जो घेरा है उसी पे हम आज ध्यान देने वाले हैं। So let's go to the third slide. तो इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं तीसरी स्लाइड की ओर आगे। Yeah, there we are. Can you make it a bit bigger? Possible? थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा? No. Okay. I hope you can see at the back there. तो शायद पीछे वाले जो लोग हैं उनको दिख रहा होगा ऐसे। Anyway, I will describe it, so even if you can't see it in detail, you'll be able to follow. तो मैं इसका वर्णन करने जा रहा हूँ, तो भले ही उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या। Before I start to describe it, there's something I need to talk about. तो इससे पहले कि मैं इसका वर्णन करूँ, कुछ बातें हैं जिसके बारे में बात करना आवश्यक होगा। It's much nicer looking at that than at me, isn't it? तो मेरी तरफ देखने से अच्छा है कि आप उस चित्र की ओर देखिए। But we'll notice that this wheel on the inside is divided into 4 sections. तो आप देख सकते हैं कि अंदर की ओर का जो घेरा है उसका 4 हिस्सों में विभाजन किया गया है। They're called past karma, past phala. Past karma, present phala. तो उसमें कहा गया है विगत के कर्म और वर्तमान के परिणाम। And then present karma and future phala. और वर्तमान के कर्म और भविष्य के फल या परिणाम। So past, present, future. तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। Now this can be interpreted in many different ways. और इसे बहुत अलग-अलग प्रकार से समझा जा सकता है। It can be interpreted right now. और अभी इस वक्त उसका विश्लेषण किया जा सकता है। Just a few minutes ago, I was sitting down there.
कुछ ही समय पहले मैं नीचे वहां पे बैठा हुआ था. So now I am experiencing the phala, the fruit of my previous karma. और यहाँ अभी इस वक्त जो है मेरे जो भूतकाल के कर्म थे उसका मैं फल अनुभव कर रहा हूँ. And then I will act on that basis. और उस आधार पे मैं कुछ कार्य करूँगा. And then later, just after this talk is finished, I'll experience the phala of this karma. और बाद में इस प्रवचन के खत्म होने के बाद इस कर्म के फल को मैं अनुभव करूँगा. That's going on all the time. We're partly experiencing the fruit of the past action. और ये हर वक्त घटित होते रहता है. हम कुछ हद तक जो है हमारे विगत कर्मों के फल को या परिणाम को महसूस करते रहते हैं, असर को. And we're part creating new karma which will have a future fruit. और एक अंशतः रूप में हम जो है कर्म निर्माण भी करते रहते हैं जिसका भविष्य में कुछ परिणाम होने वाला होता So है. some time ago I made the karma of agreeing to give these talks. और कुछ समय पहले मैंने एक कर्म किया था कि मैंने सहमति जताई थी कि मैं इस प्रवचन को दूंगा. Now here I am on the stage. और अभी यहाँ पे इस वक्त मैं इस मंच पे हूँ. That's the fruit of my decision. Huh? तो ये मेरे निर्णय का जो है वो परिपाटी या फल है. Now I'm creating new karma by giving a talk. और अभी मैं एक नए कर्म का निर्माण कर रहा हूँ इस प्रवचन को देखकर. Afterwards, somebody will come to Mokshsara and say what a brilliant translation she did. और बाद में कोई आएगा मोक्षसारा के पास और बोलेगा कि कितना अच्छा अनुवाद किया है. That's the consequence of my action in giving a talk. तो ये जो मेरी कृति है कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ उसका ये परिणाम है. She gets the fruit. तो उसको वो फल मिलता है. And she deserves it. But you see what I mean? We're always living with the consequences of the past. तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ. हम हमेशा जो है विगत के परिणामों के साथ जी रहे होते हैं. And we're creating the future. और हम भविष्य का निर्माण कर रहे होते And हैं. then we have to live with the consequences of our present actions. और फिर हमारे जो कि वर्तमान के कर्म है उसके परिणामों के साथ हमें जीना पड़ता है. If I steal something from Mokshsara's pocket, अगर मैं मोक्षसारा की जेब से कुछ चुराता हूँ. actually I don't think she has anything in her pocket. I don't have pockets. No pocket even. But if I were to steal something from her watch, a very nice blue watch, तो अगर मैं उसके पास से कुछ चुराता हूँ, then I would get a consequence for that. तो उसके परिणाम मुझे प्राप्त होंगे. I would be arrested. और मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ. You see, every moment we're creating karma which has a future result. तो हर वक्त हम कुछ कार्य का निर्माण कर रहे रहते हैं जिसका भविष्य में कुछ परिणाम होता है. And what we're experiencing now is a consequence of our previous karma. और अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं वो हमारे विगत के कर्मों का परिणाम है. Yesterday, those of you who were here, whether live or on TV, will have heard me talking about the niyamas. तो कल जो लोग यहाँ पे थे मुझे सुन रहे होंगे यहाँ पर या टीवी पर, तो उस कर्म का कुछ उनके ऊपर परिणाम हुआ हो. So some of the consequences we'll be experiencing are to do with karma. Some are just to do with physics, with biology, or just with the mind's automatic functioning. तो कुछ कर्म जो हम अनुभव कर रहे होंगे उसका संबंध तो होगा कि और उसका संबंध होगा सिर्फ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या अन्य किसी बातों के साथ. So yes, we experience results, but they're not just of our karma. There are other factors. तो निश्चित ही हम परिणामों को महसूस करते हैं, लेकिन वो केवल हमारे कर्मों के परिणाम नहीं होते, इसमें अन्य तत्व भी सम्मिलित होते हैं. She's experiencing the consequences of her decision to translate. तो वो अपने अनुवाद करने के निर्णय के परिणामों को महसूस कर रही है. And she's been translating all day, so she's a bit tired. Yeah. तो वो सारा दिन अनुवाद कर रही थी, इसलिए वो बहुत थोड़ी सी थकी हुई है. But yes, we live with the consequences of the past. तो हम जो है हमारे विगत काल के परिणामों के साथ जीते हैं. And we create a consequence in the future. और हम भविष्य के लिए परिणामों का निर्माण करते हैं. So that's happening moment by moment. और ये हर क्षण घटित होते रहता है. But it's also traditionally understood that it's occurring from previous lives and to future lives. लेकिन पारंपरिक रूप से इसे इस तरह से भी समझा जाता है कि ये पूर्व जन्म से चले आते होता है, ये अगले जन्म तक चलते जाता है. This is traditional Buddhist teaching. और ये पारंपरिक बौद्ध शिक्षा है. You don't have to believe it. It's okay. आपको इसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं करते तो भी ठीक है. It's not compulsory to believe anything.
Huh? ये अनिवार्य नहीं है कि आप किसी भी चीज पे विश्वास करें। But it is quite clear that the Buddha believed in this. लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि बुद्ध इसमें यकीन रखते थे। And in fact, there's good evidence that Baba Sahib too accepted this. और इसके भी काफी सबूत है कि बाबा साहब खुद भी इस बात को मानते थे। I recently reread Nanak Chand Ratu, his PA, his account of his experience with Baba Sahib. हाल ही में मैंने नानक चंद रतु को पढ़ा है और जिसमें उन्होंने उनका बाबा साहब का जो अनुभव है उनको आया हो उसका वर्णन किया है। And he says that in the last year of his life, he gave a talk at Anand Vihar in Delhi. और उन्होंने कहा है कि अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली में आनंद विहार में प्रवचन दिया है। And he said, I do believe in rebirth, in again becoming is the proper Buddhist term. और उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित ही पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, लेकिन बौद्ध शब्द अगर कहे तो पुनर्भव। And he said, I can prove it. और उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। Unfortunately, we don't have his proof. और दुर्भाग्यवश हमारे पास उनका जो है सबूत मौजूद नहीं है। He does, of course, write about it in the Buddha and his Dhamma, and there he seems to accept it. तो निश्चित इसके विषय में वो बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि वो उसको स्वीकार करते हैं। Of course, it's got nothing to do with caste. अब निश्चित इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। As I've said already, caste is a mental construction. It's not a fact. और जैसे मैं पहले ही कहा है कि जाति केवल एक मानसिक रचना है, वो कोई एक वस्तु स्थिति नहीं है। So we should be quite clear about that. और इसके विषय में हमने काफी स्पष्ट होना चाहिए। But Baba Sahib raises a very important question in the preface to the Buddha and the Dhamma, in his Dhamma. लेकिन बुद्ध और उसका धम्म का जो प्रास्ताविक है उसमें बाबा साहब एक महत्वपूर्ण सवाल को उठाते हैं। He says that the Buddha Dhamma teaches that there is no Atma. वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ये सिखाता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। So it also teaches that there's rebirth. और वो ये भी सिखाता है कि वहाँ पे पुनर्जन्म है। So that leaves a big question mark. तो फिर इससे एक सवाल खड़ा हो जाता है। What is rebirth? पुनर्जन्म क्या है या पुनर्भव क्या है? It's not like you're driving a car. Yeah? ये इस तरह से नहीं होता है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं। You have your own car. आपके पास अपनी खुद की एक गाड़ी है। And then you decide to sell your car and buy a new one. और फिर आप तय करते हैं कि अपनी गाड़ी आप बेच देंगे और दूसरी गाड़ी खरीदेंगे। So the car driver gets out of his old car and gets into a new one and drives away. तो ये गाड़ी का जो चालक होता है अपनी गाड़ी में से निकलता है, नई गाड़ी में बैठता है और उस नई गाड़ी को चलाते हुए चला जाता है। Driver is the same, car is different. तो ये चालक जो है वही है, लेकिन कार जो है वो दूसरी है। That's Atmavada. तो ये आत्मवाद है। That's the teaching of Atman. Yeah? और ये आत्म की शिक्षा है, आत्मा की शिक्षा है। Different body, same Atman. तो शरीर अलग अलग होते हैं लेकिन आत्मा जो है वही होता है। That's not the Buddhist teaching. ये बौद्ध शिक्षा नहीं है। Because there's nothing permanent anywhere at all. क्योंकि कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्थायी है, नित्य है। Now, in order to understand this, we need to understand two quite important ideas. और इस बात को समझने के लिए हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पनाओं को समझना होगा। The first idea is the idea of identity. तो पहली जो कल्पना है वो एक पहचान की कल्पना है, पहचान का विचार है। One thing is the same as another. तो एक चीज जो है बिल्कुल दूसरी की चीज ही जैसी है। So you could say that the driver of the first car is the same as the driver of the second car. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली कार का जो चालक है वो दूसरी कार के चालक के जैसा ही है। So if we were to think of self in terms of identity, the self that I am now would be identical with the self that I was yesterday. तो एक जैसा होने के संदर्भ में अगर हम सोचते हैं तो अभी मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं दूसरे इसमें भी रहूँगा। It would be the same as the self that I was 70 years ago. तो 70 साल के पहले मैं जैसा था वैसा ही अभी का भी मेरा मैं रहूँगा। 70 years ago I was just a tiny little baby. तो 70 साल पहले मैं केवल छोटा सा बालक था, बच्चा था। So sweet, so charming. और बहुत प्यारा सा था। Still bald, just like now. अभी के जैसे ही बाल नहीं थे, सर पे गंजा था। That came later, the hair. वो बाल बाद में आए मेरे सर पे। But am I really the same as that little baby? लेकिन क्या अभी मैं उसी छोटे से बालक जैसा हूँ? Of course I'm not. निश्चित ही मैं नहीं हूँ वैसा। I'm not identical with that baby. तो मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी उस छोटे बालक जैसा नहीं हूँ। There's nothing about me now that is really the same as that baby. तो मेरे अंदर, मेरे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल ही उस बालक जैसा है। The body is completely different. और मेरा शरीर पूरी तरह से अलग है। As I said the other day, every cell in the body changes at least every 7 years. और जैसे मैंने कल कहा था, हमारे शरीर की हर पेशी जो है वो 7 साल में बदल जाती है। So there's no identity between me then and me now. और इसीलिए मैं उस वक्त जैसा था और अब जैसा हूँ, उसमें कोई भी बात एक जैसी नहीं है। There's no identity between me now and me or what preceded me in a previous life. तो अभी मैं जैसा हूँ और पिछले जन्म में मैं जैसा हूँ, उसमें कोई भी बात जो है वो एक जैसी नहीं है। And there will be no identity between what I am now and what follows on from this life. और अभी मैं जैसा हूँ और इस जीवन से जो अगला जीवन निर्माण होने वाला हूँ, उसमें भी कोई बात एक जैसी नहीं होने वाली है। Atmavada is a teaching of identity. तो आत्मवाद जो है वो एक जैसा होने की शिक्षा है। It says there's something in us that does not change. वो ऐसा कहता है कि हमारे भीतर ऐसा कुछ होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, नहीं बदलता है। Now, the Buddha does not say that. बुद्ध ऐसा नहीं कहते। He rejects that. बुद्ध इस बात को नकार देते हैं। So even if you can't believe in rebirth, please be clear, this is not what the Buddha says. तो भले ही आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, फिर भी इस बात के विषय में स्पष्ट रहिए कि बुद्ध ये नहीं कहते हैं। What the Buddha says is there's a continuity of conditions. तो बुद्ध ऐसे कहते हैं कि परिस्थितियों में निरंतरता होती है। So between me and that little baby, there's a continuity of conditions. तो मुझ में और उस छोटे बालक में परिस्थितियों की एक जो है वो निरंतरता है, नियमितता है। The cells in that little body there, I can see him now, that cells in that little body there gave rise to the cells that gave rise to the cells that gave rise to the cells that are here. तो उस छोटे बच्चे को मैं अभी देख पा रहा हूँ, उसके शरीर की जो पेशियां थी, उन पेशियों से नई पेशियां निर्माण हुई, उनसे नई पेशियां निर्माण हुई और उनसे वो पेशियां निर्माण हुई जो अब इस वक्त मुझ में है। That little mind there is in a succession of conditions that led to this mind here. तो वहाँ पर वो एक जो छोटा सा दिमाग था, वो भी जो है धीरे धीरे विकसित होते हुए उस दिमाग में विकसित हुआ है जो अभी मुझ में है। So if I say that was me, I only mean in that sense of continuity. तो अगर मैं ये कहता हूँ कि वो बालक मैं था, तो मैं केवल इस निरंतर प्रक्रिया के विषय में बात कर रहा हूँ। That continuity of conditioned arising. तो ये परिस्थितियों की निरंतरता जो उदित होते रहती है। That continuity of Pratityasamudpat. और ये प्रतित्यसमुत्पाद की नियमितता है, निरंतरता। So even if you can't accept this teaching, and you shouldn't accept it just because it's said, तो भले ही आप इस शिक्षा को स्वीकृत नहीं कर पाते या इसलिए स्वीकृत करना नहीं चाहते कि बस वो बताई गई है, you should be quite clear what it is that the Buddha does say and what the Buddha does not say. तो आपको इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए कि बुद्ध क्या कहते हैं और बुद्ध क्या नहीं कहते। He definitely does not teach Atmavada. और वो निश्चित ही आत्मवाद नहीं सिखाते He हैं। definitely does not teach there's something the same in this life as in the last life. तो वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं सिखाते कि इस जीवन में कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल वैसी ही है जो पिछले जीवन में थी। In the Buddha and his Dhamma, Baba Sayadaw quotes an illustration given by the Buddha. तो बुद्ध और उनके धर्म में बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं जो बुद्ध द्वारा बताया गया है। You have a bundle of sticks, or several bundles of sticks laid side by side. तो आपके पास लकड़ियों के बहुत सारे गट्ठर हैं जो एक दूसरे के बाजू रखे हुए हैं। So you set fire to one bundle of sticks at one end. तो एक लकड़ियों के गट्ठे को आप जो है आग लगा देते हैं जो किनारे पे रखा हुआ है। That bundle sets fire to the next bundle. और उस गट्ठे की या गट्ठर की आग जो है वो उसके बाजू वाले को लग जाती है। That to the next bundle. और उसकी आग बाजू वाले को लग And जाती so on. It burns them up slowly one by one. है। और इस तरह से एक एक करके जो है सारे गट्ठर जल जाते हैं। Is that fire the same तो क्या वो आग एक ही है at the beginning as at the end? तो जो शुरुआत में आग है वो जो अंत में आग है? Well, no, it's not. It is a continuity of conditioned arising. तो नहीं, वो ज्वाला एक जैसी नहीं है, लेकिन एक चीज में से वो दूसरी चीज निर्माण हुई है। So that's the teaching.
और ये वो शिक्षा है। And I'm mentioning it because it does arise in connection with this Pratityasamudpat. और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रतित्यसमुत्पात के अंतर्गत ही उत्पन्न होती है। I should just mention for those of you who are scientifically minded that there is some exploration, some scientific exploration of rebirth. तो जो लोग वैज्ञानिक में विश्वास रखते हो या वैसा दिमाग रखते हो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसका कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण भी हुआ है। There are a number of universities with faculties of psychology that look into reports by children of previous lives. तो बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे विभाग है और जो यहाँ पे देखते हैं उन बच्चों का अध्ययन करते हैं जो मतलब मनोवैज्ञानिक विभाग होते हैं जो पिछले जन्म की कुछ घटनाएं याद आने वाले बच्चों का अभ्यास। And they find that some children do know things in this life they couldn't have known from this life. और वो जानते हैं कि वो बच्चे जो है इस जन्म में ऐसा कुछ जानते हैं जो उनका इस जन्म में जानना संभव नहीं होता है अपने पिछले जन्म के बारे में। Anyway, if you're interested, just look up on YouTube the scientific case for reincarnation. और अगर आपको रुचि है तो आप YouTube पे साइंटिफिक केस ऑफ रीइंकार्नेशन इस वीडियो को देख सकते हैं। Reincarnation is completely the wrong word from a Buddhist point of view. तो रीइंकार्नेशन या अवतार जो है बौद्ध संदर्भ से पूरी तरह से गलत शब्द है। Because it means exactly that, going from one car into another car. क्योंकि इसका अर्थ ऐसा ही होता है कि आप एक कार से निकलकर दूसरी कार में बैठे हैं। So if you're interested in following that up further, you can do so. तो अगर आप रुचि रखते हैं और अधिक उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। But let's go back to the 12 nidanas. हम फिर एक बार जो है 12 निदानों की ओर आते हैं। So we've got on the outer rim, first of all, at the top at 1 o'clock. तो बाहर का जो घेरा है जहाँ पे 1 बज रहे घड़ी के सुई में वहाँ पर we've got a picture of a blind man with a stick. वहाँ पे एक अंधे आदमी का चित्र है जिसके हाथ में छड़ी है। You can imagine somebody blind just trying to find his way forward without eyes. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई अंधा व्यक्ति है और छड़ी पकड़ के बस अपना रास्ता खोजने का प्रयास कर रहा है। So this is used as a symbol for, in this case, for ignorance. और यहाँ पे ये जो है प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अविद्या के लिए। Of course, blind people are not ignorant by any means. अब निश्चित ही अंधे व्यक्ति जो है वो अज्ञानी या ऐसे नहीं होते कि जिनमें अविद्या है। Very, very intelligent people who are blind. Yeah? और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है वो अंधे हो सकते हैं। So it's nothing to do with. It's a symbol, not to do with people. तो ये केवल एक प्रतीक है, लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। But as somebody with eyes, when you take away your eyes, you don't know where you are. तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं लेकिन अगर उसकी आंखें अलग कर दी जाए तो वो नहीं जान पाता है कि वो कहाँ पर है। So it symbolizes the fact that we are spiritually blind. तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम आध्यात्मिक रूप से जो है वो अंधे होते हैं। We don't really understand this life that we live in. और जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन को हम सही मायने में नहीं समझ पाते। It's not just that we don't understand it, we mistake it. और इतना ही नहीं कि हम केवल उसे समझ नहीं पाते लेकिन हम उसे गलत तरीके से समझते हैं। We think there's something permanent. और हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कोई चीज है जो स्थायी है, नित्य है। But there isn't anything permanent. लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्थायी या नित्य है। There isn't anything permanent. कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है। I'm sorry, it's too distracting. Yeah. So yes, we need to recognize we just don't see things truly. तो हमें इस बात को देखना पड़ता है कि हम वास्तविक रूप से चीजों को नहीं देखते हैं। We mistake the way things are. और हम चीजों को गलत प्रकार से समझते हैं। And this causes so much trouble. और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो जाती हैं। We think we understand when we don't understand. और जब हम चीजों को नहीं समझते हैं वैसे में हम सोचते हैं कि हमने समझ लिया है। We think they're permanent when they're not permanent. और जब वो स्थायी नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि वो स्थायी है, नित्य है। We think there's a fixed self when there is no fixed self. और हम ऐसा सोचते हैं कि एक स्थायी ऐसा स्व है जबकि वो नहीं होता है। We think we can create true happiness in this life when we can't.
और हम ऐसे सोचते हैं कि इस जीवन में हम वास्तविक सुख का निर्माण कर सकते हैं, जबकि हम नहीं कर सकते। We can have some happiness, we can have some pleasure, but it cannot last. तो कुछ सुख आनंद हमें मिल सकता है, लेकिन वो हमेशा बना नहीं रह सकता है। It will always pass away. वो हमेशा ही निकल जाएगा। On the basis of our misunderstanding of life, we act. और जीवन के विषय में ये हमारी जो गलत समझ होती है, उसके आधार पे फिर हम कार्य करते We हैं। form ideas, we form drishti, we form images. तो हम विचार, कल्पनाएं, दृष्टि निर्माण करते हैं उनमें से बिना सोचे। Let's take a very obvious example. एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण को देखते हैं। Because of the idea of Atman, you get the idea of caste. क्योंकि आत्मा की कल्पना को आप मानते हैं, उसमें से ही फिर आप जाति की कल्पना को ले लेते हैं। Because you have the idea of caste, you behave inhumanly towards others. और क्योंकि फिर आप जाति की कल्पना में विश्वास रखते हैं, आप औरों से अमानवीय तरीके से बर्ताव करते हैं। Because we don't see clearly, we misunderstand other human beings. और क्योंकि हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम और लोगों को गलत समझते हैं। And then we act. और फिर हम कृति करते हैं। And you get atrocity, oppression, violence, and so on. और फिर शोषण होता है, उत्पीड़न और होता है, हिंसा होती है और कई चीजें होती हैं। All the evil in the world comes out of our misunderstanding of existence. और हमारे अस्तित्व की जो हमारी गलत समझ होती है, उसमें से सारी बुराइयां निकल कर आती हैं। All our own suffering comes from that. और हमारा सारा दुख भी जो है उसी में से निर्माण होता है। So we move round to 2 o'clock. और फिर हम 2 बजे की ओर आते हैं। And then we have samskara. और वहाँ पे हम संस्कार को पाते हैं। That means condition in the sense of intentionality. और इसका अर्थ होता है संस्कार आपके उद्देश्य के संदर्भ में। The intentions that flow from our ignorance. तो वो उद्देश्य जो आपके अविद्या या अज्ञान के कारण निर्माण होते हैं। The image here is of a potter making a pot on a wheel. तो यहाँ पे जो चित्र है वो एक मतलब इसका है कुम्हार का है जो घड़ा बनाता रहता है अपने चक्र पे। You have a lump of clay and you form it into a pot. तो आपके पास मिट्टी होती है और उस मिट्टी को आप एक बर्तन का आकार देते रहते हैं। Obviously, what's in the mind of the potter forms the pot. अब निश्चित ही उस कुम्हार के दिमाग में जो होता है वो विचार उस बर्तन का या घड़े का निर्माण करते रहते हैं। So ignorance is the potter. तो ये जो अविद्या है ये कुम्हार है। And then the potter is shaping the pot on the basis of that ignorance. और वो कुम्हार जो है उस अविद्या के आधार पर उस बर्तन को आकार दे रहा होता है। So in the past we've acted on the basis of our misunderstanding of this life. और विगत काल में हमारे इस जीवन की जो गलत समझ है उसके आधार पे हमने कुछ कृतियां कर्म किया हुआ And that's created this life as it is now, right this minute. उसी बात ने हमारे जीवन को वर्तमान में इस क्षण में वो जैसी है उसका निर्माण किया है। We then move round to a monkey up a tree. और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे एक बंदर है झाड़ के ऊपर। A monkey just jumping around in the tree, trying to find somewhere to perch. तो बंदर जो है उस पेड़ पर बस इधर-उधर कूद रहा है, कुछ पाने की वो कोशिश कर रहा है। Trying to find something to eat. और वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। This is the image for Vijnana. और ये जो है विज्ञान का प्रतीक है। The mind, the basic mind. तो हमारा जो बुनियादी मन होता है। It's said to be that the mind as it's first created at the moment of conception. तो ये वो मन है जो गर्भधारणा के वक्त सर्वप्रथम निर्माण होता है। But it's the mind that initially emerges right now. लेकिन ये वो वाला भी मन है जो अभी इसी वर्तमान क्षण में उत्पन्न होता है। Just a basic flash of awareness. तो सजगता की या जागृति की बस एक झलक। The next image is of a boat with somebody steering and people rowing. तो अगला जो चित्र है उसमें एक नौका है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है उस नौका को चला रहे हैं। I'm afraid you can't see these very clearly. तो मुझे खेद है कि आप बहुत स्पष्ट रूप से उसको नहीं देख पा रहे हैं। You can see it with your mind. लेकिन आप अपने मन से इस चित्र को देख सकते हैं। You can imagine somebody in a boat steering the boat. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ लोग नौका में नाव में बैठे हैं, नौका चला रहे हैं। And others rowing. और कुछ लोग बैठे हैं और दूसरे लोग जो है वो नौका चला रहे हैं। So this is the whole developed
mind. तो ये जो है पूरी तरह से विकसित मन है। It's essentially the mind that thinks I, तो ये निश्चित रूप से वो वाला मन है जो मैं के विषय में सोचता है, and the mind that thinks other than me. और वो मन है जो सोचता है कि मैं को छोड़कर बाकी चीजें, Subject and object. तो कर्ता और कर्म। That's the mind that forms on the basis of that initial flash. तो वो जो सजगता या जागृति की पहली झलक होती है उसके आधार पर निर्मित ये मन होता है। Then we have a house with 5 windows and a door. उसके बाद हमारे पास एक घर है जिसके 5 खिड़कियां हैं और एक दरवाजा है। This represents the senses. और ये हमारी इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। The 5 senses: eyes, ears, nose, tongue, body, and the mind as a sense. तो 5 इंद्रिय जो होते हैं हमारे आँख होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, जीवा होती है और हमारी त्वचा होती है। हमारे 5 इंद्रिय और छठा मन है। All this is the result of our past ignorance and our past actions. तो ये सारा निर्माण होने का कारण है हमारा विगत का अज्ञान और हमारे विगत के कर्म। It's the fruit, the phala. और ये फल है उसका फल का। Then we have an image of sparsha. और उसके बाद हमारे पास स्पर्श के लिए एक चित्र है। That's represented by a man and woman embracing. और वो दिखाया गया है कि एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे को आलिंगन दे रहे हैं। There's contact. वहाँ पे संपर्क आता है, स्पर्श आता है। Contact between the senses and the external world. तो बाह्य जगत का और इंद्रियों का एक दूसरे के साथ स्पर्श। So the mind is coming into a relationship with the world around us. तो मन जो है हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसके संपर्क में आ रहा है। The next image is of a man with an arrow in his eye. और अगला जो चित्र है उसमें एक आदमी है जिसकी आंखों में एक बाण है। That's not a very pleasant image. तो ये कोई बहुत अच्छा है, सुखद ऐसा चित्र नहीं है। It's an image of pain. और एक पीड़ा का चित्र है। And the word that's used here is Vedana. और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है वेदना। Of course, in modern Indian languages, Vedana just means painful feeling. और निश्चित ही आधुनिक भारतीय भाषाओं में वेदना का अर्थ होता है बस पीड़ादायक या दुखद ऐसी भावना है। But in Buddhist psychology, Vedana means both pleasant and painful and neutral feeling. लेकिन बौद्ध मनोविज्ञान में वेदना का अर्थ होता है सुखद, दुखद और तटस्थ ऐसी वेदना जो सुखद या दुखद नहीं होती। When we come in contact with the external world, it gives rise to pleasure, pain, or indifference. और जब हम बाह्य जगत के संपर्क में आते हैं तो उसमें से जो है सुखद, दुखद या तटस्थ ऐसी वेदनाएं निर्माण होती है, संवेदनाएं। Every sense perception that we have gives rise to a feeling. तो हमारे इंद्रियों की हर समझ से जुड़ी हुई जो बात होती है एक भावना को उत्पन्न करती है। We are affected by our perceptions. और हमारी जो समझ होती है उसका हमारे ऊपर एक परिणाम होता है। What happens then? उसके बाद क्या होता है? Well, of course, we want the pleasant feelings. अब निश्चित ही जो सुखद वेदनाएं उसको हम रखना चाहते हैं। We want to continue those pleasant feelings. और उन सुखद वेदनाओं को जो है हम महसूस करते रहना चाहते हैं। We want to get rid of the painful feelings. और जो पीड़ादायक वेदनाएं से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। We want to find something to stimulate us from the neutral feelings. और हम चाहते हैं कि हम ऐसी किसी चीज को पाए कि अगर हमारी वेदनाएं तटस्थ है तो उस स्थिति से वो हमें उत्तेजित करे। So we react. और फिर हम जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं। We try to get hold of those pleasant feelings and keep them. तो हम कोशिश करते हैं कि जो सुखद वेदनाएं है उसको हम पकड़ कर रखें और अपने पास रखें। So up till now we've been dealing with the phala, the consequence of the past. तो अब तक हम फल को देख रहे थे जो हमारे विगत के कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है। Now we move into karma of the phala process in the present. Yeah. और अब जो है हम वर्तमान की फल प्रक्रिया की ओर आगे आ रहे हैं। Now we move into the karma process of the present. और अब जो है हम वर्तमान के कर्म की प्रक्रिया की ओर आ रहे हैं। We begin to act of ourselves. तो हम जो है स्वयं के लिए कार्य करने लगते हैं। So independence on Vedana arises Trishna.
तो वेदना के आधार पर फिर तृष्णा उत्पन्न होती है we start to crave. और हम चीजों के बारे में मतलब तृष्णा करने लगते हैं, इसको पाना चाहते We हैं want more. हम ज्यादा चाहते हैं Or we want to push away if it's painful. और अगर कोई चीज पीड़ादायक है तो हम उसे दूर धकेलना चाहते We हैं want to get rid of painful feelings so we can have pleasurable feelings. और हम पीड़ादायक भावना से मुक्ति चाहते हैं ताकि हमको जो है वो सुखद वेदनाएं मिले This is a crucial point in the Nidana chain. और निदानों की कड़ियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है Tomorrow we will look at this much more closely. और कल जो है और भी अधिक करीब से या नजदीकी से हम इसकी ओर Because देखेंगे this is where we need to work. क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पे कार्य करने की हमें आवश्यकता होती But है today, just let's notice that transition from Vedana to Trishna. लेकिन आज जो है हम केवल इस सिद्धांत को देखेंगे वेदना से तृष्णा की ओर Trishna is represented by a man being offered a drink, by a seated man being offered a drink by a woman. और तृष्णा के लिए जो चित्र इस्तेमाल किया गया है कि आदमी बैठा हुआ है और एक स्त्री जो है उसको मदिरा दे रही है On the basis of our craving, we start to grasp and hold on to. और हमारी जो तृष्णा होती है उसके आधार पर जो है हम किसी चीज को पकड़ कर रखना चाहते So हैं on the basis of Trishna arises Upadana. और तृष्णा के आधार पर फिर उपादान निर्माण होता है And that's represented by somebody picking fruit from a tree. और उसके लिए चित्र दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति है जो पेड़ से फल इकट्ठा कर रहा है So we've got the experience of pleasure from a fruit. तो जो फल होता है उससे हमें कुछ सुखद वेदनाएं होती है That's the Vedana. वो वेदना होती है We like that. We want more. और हमें वो अच्छा लगता है पसंद आता है हम ज्यादा की चाह रखते हैं That's Trishna. वो तृष्णा है And then we take it. और फिर उसके बाद हम उसे ले लेते हैं That's Upadana. वो उपादान है And that all creates a sort of stream, a momentum of our mind. और वो जो है कड़ी का निर्माण करते हैं हमारे मन को वो एक गति प्रदान कर देते हैं Our mind is conditioned in a particular way, in a particular direction. और एक विशिष्ट प्रकार से हमारा मन संस्कारित होते रहता है एक विशिष्ट दिशा में And this is represented by a pregnant woman. और फिर इसको एक गर्भवती स्त्री के चित्र के द्वारा दिखाया गया है In other words, she's pregnant with the future. Yeah? और दूसरे शब्दों में भविष्य को वो अपने गर्भ में ली हुई है It represents bhava. और वो भव दर्शाता है It represents becoming, what is to be. और उसका अर्थ होता है कि कुछ बनना जो आगे बनने वाला है On the basis of our craving and of our grasping, we shape the future. तो हमारी तृष्णा और हमारी चीजों को थामे रखने के आधार पर हम भविष्य को आकार देते हैं निर्मित करते हैं So that's all the karma process of the present. तो ये सारी जो है वर्तमान की कर्म प्रक्रिया है And then we move over to the future. और उसके बाद हम भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं Because of that craving, because of that grasping, because of that becoming, rebirth. तो उस तृष्णा के कारण उस उपादान के कारण हम भव में आते हैं कुछ बनते हैं If you don't think of it as rebirth and a new life, you can just think of it rebirth now, rebirth now, rebirth now. अगर अगले जन्म के पुनर्जन्म के बारे में आप नहीं सोचना चाहते तो आप अगले क्षण के जन्म के बारे में सोच सकते हैं अभी का जन्म अभी का जन्म अभी का It's going on moment by moment. This wheel is spinning moment by moment by तो moment. हर क्षण ये हो रहा है ये चक्र जो है हर क्षण में जो है वो घूम रहा है We're constantly clinging to things and creating a new set of conditions. तो हम हमेशा ही जो है वो चीजों को मतलब पकड़ कर रखते हैं और परिस्थितियों के नए संच को जो है वो निर्मित करते रहते हैं So independence on Bhava arises jati. और फिर भव के आधार पर जाति का निर्माण होता है Jati here meaning simply birth. और जाति का यहाँ पे अर्थ होता है जन्म The rebirth or the birth of the new moment. तो नए क्षण का जन्म पुनर्जन्म या पुनर्भव Or the birth of the new phase in your life. या आपके जीवन के नए पहलू का जन्म The birth of the next part of your life. आपके जीवन के अगले हिस्से का जन्म Or the birth of a new life. या एक नए जीवन का जन्म Because all of this is underlain by ignorance, there's suffering. और क्योंकि इन सभी के तह में
अविद्या होती है वहाँ पर दुख भी होता है You're not living in accordance with life. और आप जीवन के अनुसार नहीं जी रहे You होते think you can hold on to things. आप ऐसा सोचते हैं कि आप चीजों को पकड़ कर रख You सकते think हैं you can create a set of worldly conditions which will make you always happy. और आप ऐसा सोचते हैं कि आप भौतिक परिस्थितियों के ऐसे संच को निर्माण कर सकते हैं जो आपको हमेशा खुश रख सकता है And because we're trying to stop the flow of life, we suffer. और क्योंकि फिर इस जीवन के प्रवाह को हम रोकने का प्रयास करते हैं हम दुख पाते हैं Independence on jati arises jara marana. और जाति के आधार पर फिर जरा और मरण उत्पन्न होता है Old age, sickness and death, this whole mass of suffering in life. तो बुढ़ापा बीमारी मृत्यु जीवन के साथ जुड़े हुए जितने भी दुख हैं So in this way, the 12 steps and stages show us how we create our own suffering. तो इस प्रकार से ये 12 चरण या 12 जो कड़ियां हैं हमें बताती है कि किस प्रकार से हम खुद ही अपने दुख का निर्माण करते We're हैं going to look much more closely at this tomorrow. इसकी हम और करीब से कल देखने वाले हैं Today, the main thing is you just get a picture of these 12 links. आज मुख्य बात ये है कि ये जो 12 कड़ियां हैं इसके चित्र के बारे में आप थोड़ी स्पष्टता हासिल And you करें recognize that what they're telling you is that because of your own craving, because of your own hatred, because of our own craving, our own hatred, we create our own suffering. तो वो ये बताते हैं कि हमारे अपनी तृष्णा के कारण हमारे अपने द्वेष के कारण मेरी अपनी तृष्णा और मेरे अपने द्वेष के कारण मैं अपने दुखों का निर्माण करती हूँ We even form our own bodies. हम खुद ही अपने शरीरों का निर्माण करते हैं This is said to be what happens life by life. और ये कहा जाता है कि जीवन दर जीवन ऐसा ही होता है But what your craving and your hatred actually affect your body now. लेकिन आपकी जो तृष्णा है आपका द्वेष जो है इस क्षण भी आपको प्रभावित कर रहा है आपके शरीर को Craving and hatred have a physiological effect. तो ये जो तृष्णा है और ये जो द्वेष है इसका आपके शरीर के ऊपर भी परिणाम होता है They affect the way your body is. और आपका शरीर किस प्रकार का है उस बात को भी वो प्रभावित करता है Hatred twists the body. तो जो द्वेष है वो शरीर को मरोड़ देता है Craving distorts the body. और तृष्णा जो है आपके शरीर को विकृत कर देती It है shapes your mind. वो आपके मन को आकार देती है So this is the pattern that we're being shown. तो ये वो रचना है जो हमें बताई गई है This is on your flag. और ये आपके ध्वज पर है Even though it tells us how we suffer, it also gives us a clue to how we get rid of suffering. तो अगर ये हमें ये बताती है कि किस प्रकार से हम दुख पाते हैं हमें वो ये भी बताती है कि किस प्रकार से हम उस दुख को दूर कर सकते हैं If this is how suffering occurs, well, we've got to reverse it. तो अगर इस दिशा में दुख का निर्माण होता है तो उससे मुक्त होने के लिए हमें उसे उल्टा घुमाना होगा We've got to stop craving, we've got to stop hating, तो हमें तृष्णा को रोकना पड़ेगा हमें द्वेष को रोकना पड़ेगा we've got to remove ignorance. और हमें अज्ञान को दूर करना पड़ेगा If we can do that, then the wheel stops. अगर हम ये कर पाए तो इस चक्र का घूमना जो है वो रुक जाता है So on the 24 spokes, we have 12 that create suffering, 12 that undo it. तो फिर वो जो 24 आलियां है उसमें से 12 आलियों पर वो बातें हैं जो दुख का निर्माण करती है और 12 आलियों पे वो बातें हैं जो दुख को दूर करती है Can we go back to the Ashok Chakra? Is that तो क्या हम possible? वापस एक बार अशोक चक्र की स्लाइड पर जा सकते हैं There it is. तो ये यहाँ पर है The 12 links that show how our suffering occurs. तो 12 आलियां जो हमें बताती हैं कि किस प्रकार से हमारा दुख अस्तित्व में आता है And the undoing of those 12 links. और फिर किस प्रकार से हम इन 12 कड़ियों को जो है वो दूर कर सकते हैं But those second 12 also indicate a set of steps and stages through which we can go. लेकिन वो बाकी की 12 जो है वो उन चरणों का भी प्रतिनिधित्व करती है कि जिन चरणों से होकर हम गुजर सकते हैं And tomorrow we will examine those in detail. और कल हम उसको विस्तारपूर्वक देखेंगे But I hope you've now seen just how
extraordinary it is that this Ashok Chakra is there in the center of your national flag. लेकिन मुझे लगता है कि आप अब देख पाए होंगे कि ये बात कितनी अच्छी है कि वहाँ पे आपके राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ही अशोक चक्र है। If all the citizens of India really understood the significance of their own flag, what a wonderful country India would be. तो अगर सारे भारतीय इस बात को समझ पाए इसके महत्व को तो भारत कितना अच्छा देश बन जाएगा। But who? They don't know. Nobody's told people. लेकिन वो इस बात को बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि किसी ने भी लोगों को ये नहीं बताया। Whose fault is that? और ये किसकी गलती है? Hamari. It's our fault. तो ये हमारी गलती है। We haven't told people. क्योंकि ये हमने लोगों को नहीं बताया है। It's up to us to communicate the real significance of the center of your national flag. तो ये हमारे ऊपर है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो बात है उसका वास्तविक महत्व क्या है ये लोगों को बताएं। And you've got to help us Europeans, huh? और आपको हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि हम यूरोपीय लोग हैं। You've got to help us put the Ashok Chakra in the center of our flags. और आपको हमें भी सहायता करनी पड़ेगी कि हम अशोक चक्र को हमारे ध्वज के केंद्र में रखते हैं। But the way we do this, we can't promise to do it next week, but we'll try. लेकिन अगले ही हफ्ते कर देंगे, हम ऐसा नहीं वादा करते लेकिन हम कोशिश करेंगे। But we really need all of us to communicate the deep meaning behind this Ashok Chakra. लेकिन इस अशोक चक्र के पीछे जो गंभीर अर्थ है, गहरा अर्थ है, वो संवादित हमें करना चाहिए। The illustration of how human suffering occurs. तो इस बात का मतलब उदाहरण पेश करना कि किस प्रकार से मानवीय दुख जो है अस्तित्व में आता है And how we create suffering for others. और किस प्रकार से हम अन्य लोगों के लिए दुख निर्माण करते हैं And how we undo that suffering. और किस प्रकार से हम उस दुख को दूर कर सकते हैं How we therefore bring about the Dhammarajya. और किस प्रकार से हम जो है धर्मराज्य को साकार कर सकते What हैं Baba said, called the kingdom of righteousness. और जिसे बाबा साहब जो है एक न्यायपूर्ण समाज कहते हैं And this is our task, brothers and sisters. और भाइयों बहनों ये हमारा कार्य है What a genius Baba Sahib was. बाबा साहब कितने बुद्धिमत्तापूर्ण है, कितने बुद्धिमान है। Right in the center of the national flag, this deep teaching. तो राष्ट्रीय ध्वज के बिल्कुल ही केंद्र में गहरी ऐसी शिक्षा। I'm sure he knew what he was doing. तो मुझे यकीन है, पता है, पक्का विश्वास है कि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। Probably nobody else realized. तो भले ही किसी और को समझ में नहीं आया होगा। But what an act of genius. लेकिन कितना मतलब वो कौशल्यपूर्ण या होशियारी का काम था बुद्धि। As long as that Ashok Chakra is in the center of your national flag, there is hope. तो जब तक वो अशोक चक्र आपके राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में तब तक आशा कायम है। And I salute that flag with you. और मैं आपके साथ उस ध्वज को सलाम करता हूँ। Namo Buddhaya, Jai Hind.